Yeah, keep reading. Magnetism and matter. Small chapter, magnetism matter. Interesting chapter, and easy chapter also. Okay. So magnetism matter आने के लिए little bit electrostatics का formula will be you have to learn electrostatic because we are comparing their कैसा है charges में इधर क्या है relation है. Okay. So magnetism matter में first we will study about the bar magnet, उसका properties, magnetic field lines, which is like basic 10th class only. Then we will go for analogy करने वाला है, and then different types of materials we are seeing, para, dia, ferro. Chapter done. These are the topics. Okay, chalo. First we learn about the bar magnet. Bar magnet. So bar magnet, you know already, it is a rod-shaped metal object which produces magnetic field in its surroundings. So whenever there is a bar magnet, उसके पास surrounding में there is a magnetic field. Okay, and you know these all things. It has two poles, north pole and south poles. So when what will happen when we suspend a free bar magnet? क्या होगा? When we suspend the free bar magnet, it will always show in the north and south direction only. Always. आप घुमा के छोड़ेगा तो भी again it will be aligned in the north and south direction. Why? Because of Earth's magnetic field. Earth is also magnet, right? वो magnet and bar magnet दोनों ऐसा align करेगा. Okay. देखो, when suspended freely with the help of thread, a magnet rests in the north south direction. ऐसा. It is always aligned in the north south direction only when I suspend freely of the bar magnet. The pole pointing towards north pole, north is north pole, and the pointing towards south is called south pole. So जो भी bar mat is nothing but compass only. Simply compass. Compass अगर मैं किधर भी घूमूं, always it is showing in the north south direction. If it is showing north south direction, that means it is east west direction we can find easily. Okay. So that is a property, whenever you freely suspend a bar mat, it will always align in the direction of the north pole and south pole of the Earth's magnetic field. स्मॉल ट्रे ले लो, एक्चुअली ट्रे लेके एक वाटर का टब, वाटर में टब है, एक स्मॉल लकड़ी का पीस ले लो, उसके ऊपर बार मैट रखो. यू ऑलरेडी नो दैट सपोज इज नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ, यू पुट उल्टा ऑफ द बार मैट एंड लकड़ी के ऊपर ऐसे पानी में डालो. व्हाट विल हैपन, द वुड आल्सो विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. आप कैसे भी रोटेट करो, अगेन विल रोटेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ऑलवेज बार मैट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली. Okay. Now properties of bar mat. Bar mat का properties, suppose bar mat is there, उसमें I want north and south separately. Can we get north and south separately in bar mat? In a bar mat is there, it has north pole and south pole. Suppose I want separate north pole south pole, we will think it is will cut. कट किया तो ये क्या होगा, इसलिए साउथ नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ नॉर्थ होगा. आप कितना भी पीसेस कट करो, अगेन साउथ नॉर्थ आएगा. So one pole does not exist, monopole does not exist. Okay, and these all things, like poles attract, like poles repel attract, repel. Unlike poles attract each other, right? Chalo. Like poles repel each other, unlike poles attract each other. Conform test of polarity repulsion is not attraction. Conform test of polarity is repulsion, not attraction. Suppose मान लो you have one one rod, two cylinder जैसा shape वाला है. One is magnet, one is iron. One is magnet, one is iron. How to confirm that we don't know which is magnet, which is iron? How to confirm? How to confirm? देखो ये नजदीक ले तो ये भी अट्रैक्ट होगा, ये नजदीक ले तो अट्रैक्ट होगा. और क्या करेगा? Whether you will take father nail and check करे, ऐसा नहीं है. So क्या करने वाले हैं? You take a bar magnet. Okay. So north pole, south pole, suppose मान लो. ये suppose this is magnet, this is iron nail. Okay. Now when I bring, दोनों अट्रैक्ट होगा. Okay. But when I put उल्टा, ये repulsion होगा, ये अट्रैक्ट होगा. Okay. The repulsion is the conform test of polarity is repulsion, not attraction. Repulsion will decide that it is a magnet or not.
बिकॉज आयरन एंड मैग्नेट दोनों अट्रैक्टिव होगा, बट रिपल्शन उल्टा करने से रिपल्शन करने वाला ओनली मैग्नेट है. ओके. एंड मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा. And the poles are situated near the ends of the magnet, not exactly the ends. Poles कभी कभी भी near the ends रहेगा, not exactly the ends. Near ends means, see, this is a bar magnet, so north pole, south pole. ये exactly corner में नहीं रहेगा, थोड़ा near रहेगा. इसको क्या बोलते हैं मालूम है? The distance between the north and so this magnetic length. Magnetic length बोलते हैं. Okay, distance between north pole and south pole. And total length को we call as geometrical length. Total length is called geometrical length. Okay. Now if I divide magnetic length upon geometrical length is 0.84. इसका value is 0.84. Geometrical length is total length of the bar magnet. But north pole, south pole will be near end रहेगा. So magnetic length to the geometrical length ratio is nothing but 0.84. Hello, 84% may only the magnetic length will be there. Okay. Chalo. No, bar magnet has a magnetic dipole. See, dipole पढ़ा है हम लोग, किधर किधर पढ़ा है? फर्स्ट चार्जेस के बारे में मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा, P वैल्यू पढ़ा ना, P इज इक्वल टू Q इंटू 12. सेकंड वी स्टडीड करंट कैरिंग कॉइल की वजह से देयर इज ए मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, दैट इज आल्सो एक्टिंग लाइक डाइपोल बोल के. उधर भी फार्मूला क्या है? IA वी स्टडीड. नाउ हियर बार मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट पढ़ रहा है, बिकॉज टू पोल्स है ना. बार मैग्नेट हैज two poles, north pole, south pole. Okay. Here we will represent small m as pole strength. Small m as pole strength. Okay. Now distance between two poles. Always we are taking this one magnetic length only. Distance between two lengths is 12. Distance between two poles is 12. Then iska magnetic moment is defined as Q into 12 right before. इधर Q के जगह पे M into 12. Pole strength into P. M is called pole strength. Pole strength. Pole strength into 12. Okay. And direction, it is vector quantity. Direction is from udhar minus Q to plus Q, right? Minus Q is nothing but south pole. So south pole to north pole is the magnetic moment का direction. So एक formula आ गया, magnetic moment is M into 12. M is the pole strength into 12. And इसका SI units is ampere meter. Pole strength का ampere meter. And 12 is a magnetic length बोलते हैं. And magnetic moment का units क्या होगा? SI units. This is ampere meter into meter. So SI units is ampere meter square. Ampere meter square is the SI unit of magnetic moment. So three formulas will be there for magnetic moment: bar magnet, current carrying coil, and charge coils. So it is a vector quantity ना. So अगर दो तीन मैग्नेट दिया तो वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा. नेट मैग्नेटिक मोमेंट वी हैव टू फाइंड. ओके. चलो. Two identical thin bar magnets, each of length L and pole strength M, are placed right angle to each other. Okay. So two bar magnets are there, are placed right angle to each other. इसका लेंथ है L. And pole strength is M. So इसका pole strength M. So two identical, right? इसका भी pole strength है M. इसका pole strength है M. With the north pole of one touching the south pole of other. So north pole is touching the south pole of other. So this will be north pole. This is the south pole. Okay. So इसका first bang S1, N1.
N2 S2 सेकंड बार में ऐड का 2 लगा रहा हूँ. ओके, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम. सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए. सो हाउ टू फाइंड? देखो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. फर्स्ट बार मैग्नेट का M1 एंड इसका साउथ नॉर्थ, राइट, M2. तो मैं क्या करूंगा, वेक्टोरियल ऐड करूंगा. देखो दिस इज M1 and tail to tail I'll connect magnetic moment M2 so that we can use parallelogram law, net magnetic moment. So M1 is how much? M1 is magnetic moment का formula is M into 12. So M into 12 is the distance between two poles. So इधर L दिया है, L दिया तो L डालो, L by 2 दिया तो L by 2 डालो. Okay, so distance between the two poles is L. Similarly M2 कितना है? M into pole strength into distance between them is L. So M1 is equal to M2 is equal to, दोनों सेम है ना, I called it as M. Okay, so instead of M1 M2 what I'm doing is I'm taking M and M. So what is the net resultant of the system का net magnetic moment is this one, root 2R. root 2 ml. And net magnetic moment root 2 m के जगह में small m into L, small m into L into L, root 2 m L, right? So कितना होगा? हाँ, root 2 into m, right? Sorry, ml क्यों? root 2 into m. This is answer, right? चलो, अनुष्ठ सात्विक. हाँ, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बार मैट कैसा भी लगो, ऐसा लगो, 60 डिग्रीज 90 डिग्रीज एनीथिंग, यूज द वेक्टर लॉ, यू नो, पैरेललोग्राम लॉ एंड सॉल्व. चलो, नाउ वी स्टडीड अबाउट बार मैट. नाउ फील्ड के बारे में देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, it is a space around the magnet in which magnetic effects can be experienced. Okay, if we keep very far में any nail, it will not attract, but उस region में if I bring any metal piece को, it will get attracted. Okay, a space around a magnet in which magnetic effects can be experienced is called magnetic field. And SI unit of magnetic field is Tesla. We know already Tesla, right? We wrote in the moving charges magnetism. And very important thing, names are given. Magnetic field strength, which we represent as B, usko we call as magnetic induction, magnetic induction field, or magnetic flux density. All are same. B को different names दिया है. So B is equal to, formula क्या है actually? We know that flux is equal to, magnetic flux is equal to B dot A, right? So from this, B is equal to flux by magnetic flux upon unit area. Magnetic flux upon unit area. Now 1 Tesla is nothing but 1 Weber per meter square, because flux is B by A, right? Weber per meter square, or 10 power of 4 Gauss बोलते हैं उसको. अदर यूनिट से गॉस में कन्वर्ट करने के लिए 10 power of 4 से मल्टीप्लाई करने का. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में लर्न करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में विच वी डन इन 10th क्लास, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, imaginary lines drawn in space along which a free north pole will move if allowed to do so. अगर मैं मैग्नेट को, देखो मैग्नेट को, if I put a compass will show the direction, उस direction only the north pole, मतलब magnetic field is there बोल के आपको आइडिया आने का. उसी डायरेक्शन में compass needle will show, उसी डायरेक्शन में the magnetic field lines will be there. So along which free north pole would move so.
thinking that free north pole, suppose मान लो only north pole is there, whatever the direction is showing, the direction only the magnetic field lines are there बोल के indication. उसका properties देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का Magnetic field lines are closed loops. electric field lines are not closed loops. Magnetic field lines are closed loops. Electric field lines only it will go from positive charge to negative charge. But ये क्या जाएगा? ये इधर से जाएगा and south से north inside आएगा. It forms a closed loops always. Okay. चलो. Now we learn the properties. Magnetic field lines forms a closed loop. Outside is from north to south and inside is from south to north. First property. Easy chapters को you should be very perfect हो जाएगा. One question आ जाएगा. That is a plus point, you know. Next, the tangent at any point on the field lines gives the direction of magnetic field lines at that point. Anywhere, suppose this is a magnetic field line. अगर मैं tangent draw करूंगा, the tangent indicates the direction of magnetic field lines. मतलब उस direction में. See, tangent is nothing but compass. Compass का needle which direction it is showing, that direction gives the direction of magnetic field line. Okay. Okay. Now, in the region of strong magnetic field, the field lines are closer. In the region of weak magnetic field, the field lines are far. Suppose मान लो I have field lines. I name as A, B. Tell me which magnetic field is more? Magnetic field is more at A or B? A. Magnetic field of A is greater than magnetic field at B. Okay. Why? Because a closer है, a far है. Closer will have more magnetic field and farer will have less magnetic field. And next one is two magnetic field lines never intersect. Here already you learned in class में. कभी भी magnetic field lines are never intersect. Why? If they intersect, it will show two different directions. At this point of intersection में, it will show two different directions, which is not possible. मतलब if I put a compass, bar mat में, I took a compass, I'll see all the positions. I am getting only one direction only compass. Compass कभी भी दो direction में नहीं दिख रहे उधर. That means never intersect बोल के आपको idea आने का. Magnetic field lines never intersect. Now we'll see the analogy. Analogy with electrostatics. देखो electrostatics आ गया. याद है अभी फॉर्मुलास देखते हैं. Electrostatics में कितना याद है? फॉर्मुला शीट है ना, पूरा सब कुछ है ना फॉर्मुला. So first formula तो easy है. Can you tell me the charge force between two charges? Because Satvik will tell. Q square by R square. Q square. Q charges are same, huh? So if charges are same, it is. Charges are different, right? Q1 Q2 है तो क्या होगा? Q1 Q2 by R square. K is formula is how much? 9 to 10 power 9. Good. Okay, the first analogy you will see Coulomb's law of electric force. Suppose charges Q1, Q2 separated by distance R. So F is equal to K Q1 Q2 by R square. Okay, where K is 1 by 4 pi epsilon naught. That value is 9 into 10 power of 9, right? 9 into 10 power of 9. Okay. And here we learned like charges क्या होगा?
like charges repel, unlike charges attract. Now Coulomb's law between two magnetic forces, Coulomb's law. So here instead of charge in the bar magnet, we have pole strength. So M1, M2. Separate distance are. Like bar magnet has pole strength, right? M1, M2. So instead of charge, pole strength. Now tell me what is the force formula? F equal to K M1 M2 by R square. This is analogy. So इसका formula remember करने की जरूरत नहीं है. Just if you remember and convert करने का. And K is here new constant है mu naught by 4 pi, which you know already. That is value is 10 power of minus 7. Mu naught is called permeability of free space. Mu naught by 4 pi is equal to 10 power of minus 7. And here, like poles, repel, unlike poles, attract. First analogy done. These are I made formula sheet. I will give the formula sheet. See, JEE means आना easy है. People को वो something करेगा, उसको कुछ नहीं है. See, 25 questions में आपको you choose a small chapters, almost 10 to 12 chapters are there. Small chapters. मतलब ये कितना एक दिन दो दिन में होने वाला chapters are there. ऐसा वाला chapters पकड़ो, formula sheet रहेगा, by heart करो, do the questions models in that में and spare for some time. So maximum if you do 2 days for one chapter you can finish. I'll tell the chapters names also, very small chapters. मतलब वो ऐसे पकड़े तो देखो out of 25, 12 questions तो पक्का. असल देखते देखते small questions easy tick करेगा. Then थोड़ा बड़ा chapters में easy chapters you made the list, you make a list. उसमें करो, उसमें nearly 6 to 7 questions रहेगा. थोड़ा ऐसा करो, easy हो जाए. 20 तक क्या तो आपको बहुत अच्छा रैंक आने वाला है. 20 तक questions क्या तो each subject 20 will be in a state ranker में. I told right 20. So that's why कभी भी you not feel that more hard है. See कैसे भी देखो starting chapters if first year also if you last में revise करने वाला है nearly work for energy and system of particles तक maximum if I do 1 week revision class हो जाएगा, पूरा perfect हो जाएगा. Starting के chapters will be done and last में formula based chapters are there. थोड़ा revise करके practice करके then we'll go for papers के जाने वाला है. Okay, so this is one of the chapter. No 12th class में this is the first chapter, small chapter, right? ये वाला चैप्टर आपको बी परफेक्ट स्टार्टिंग से डोंट मिस द क्लासेस, बी परफेक्ट. ओके चलो नो फॉर्मूला गया ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो अभी. सात्विक आप भी 5 months ओनली इज द लास्ट 5 months. ओके करो क्वेश्चन करो. देखो इसमें डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन लेंदी होगा बट डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ d each and pole strength m each when separation between their north pole is d and separation between south pole is 3d. So diagram कैसा रहेगा? This is a bar magnet. There are two bar magnets. What they told? Calculate the force between two magnets of length d each. So d है, AB d है, and pole strength m each. M. When the separation between the north pole is d, and so here we'll be getting north pole, right? Separation between north pole is d, so this is d. And indirectly south pole का difference कितना होगा, distance कितना होगा south pole? 3d. Okay, that only told 3d. This is a diagram. Now he's telling force between two magnets. Okay, you tell me north pole क्या होगा? Ripple होगा ना, ripple होगा. ये magnet will come this side, that magnet will go this side, ripple होगा. And they are equal and opposite force. That means he's telling to find force, right? You can find any force, either first force on first magnet due to second, or force on second magnet due to first. I am interested to calculate force on first magnet due to second. Okay, because they are equal and opposite forces only. Okay, so now एक understand करो. Force on first magnet due to second magnet, right? So this pole
इसको क्या करेगा, एक एक का पोल स्ट्रेंथ का देखने देखने पड़ेगा, एक एक मोनोपोल्स का देखना पड़ेगा। देखो दिस वन, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा और अट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्थ एंड साउथ इज अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होगा। ये पोल इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो एक एक का पोल स्ट्रेंथ करेंगे। देखो फोर्स ऑन S1 ड्यू टू N2। okay, force on S1 due to N2. So K, what is the formula? K M1 M2, so दोनों M है, M square by distance square, distance square is 2D whole square is 4D square. okay, force is a vector quantity, we are doing vectorially. ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो ये मैग्नेट विल गो राइट साइड, राइट, राइट साइड वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। फर्स्ट आ गया। सिमिलरली ये सेम नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। सो फोर्स ऑन N1 ड्यू टू N2 क्या होगा, K M स्क्वेयर बाय डिस्टेंस स्क्वेयर इज D स्क्वेयर। ये क्या करेगा, इसको ये लेफ्ट साइड खींचेगा ना, माइनस आएगा। वेक्टोरियल ऐड कर रहा है, लास्ट में ऐड कर देने का नेट फोर्स। चलो इसका हो गया। नाउ इस पोल का देखेंगे, इस पोल इसको क्या करेगा, फोर्स ऑन S1 ड्यू टू S2। तो ये सेम पोल लाइक पोल्स विल रिपल, सो माइनस आएगा। K M स्क्वेयर बाय डिस्टेंस स्क्वेयर इज 3D होल स्क्वेयर इज 9D स्क्वेयर। सिमिलरली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन N1 ड्यू टू S2। K M स्क्वेयर बाय इसका डिस्टेंस इज 2D होल स्क्वेयर इज 4D स्क्वेयर। So net force calculate करो, add all the forces, take common, you will get the values also. K M square by D square का मैं कॉमन लूंगा, 1/4 minus 1/9 minus 1/9, हाँ 1 only, plus 1/4 ले लो। फाइनल कितना आएगा, -11/19 km square by d square. -11 km square by 18D square। देखो माइनस आया, so it is a repulsive force, finally it is repulsive force. okay, so एक एक पोल स्ट्रेंथ का भी, इधर नो चार्ज, राइट, फोर्स कभी भी दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में we have to calculate. okay, चलो done, understood, right? now Shivang will tell. Electric field due to point charge, plus Q charge is there, R distance दूर में electric field, वो वाला पुराना वाला फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेसन का नाम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, राइट। याद है साथी आपका, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर में kq/r square. वेरी गुड, KQ/r स्क्वायर। ओके, चलो लिखो, इधर प्लस क्यू चार्ज है, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बीच में 2 चैप्टर्स का क्विज लगाने वाला हूँ, देन आपको पूरा आ जाएगा, याद हो जाएगा पूरा। ओके, पढ़ेगा ना, याद आएगा। तो इधर ए डिस्टेंस दूर में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, EA इज KQ/r square, KQ/r square. okay, and K is here 1/4πε0. okay, and here plus Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन रहेगा, व्हेन वी आर डूइंग कैलकुलेशन, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, एंड माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स, राइट। सो प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, एंड माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स। then only we used to calculate the net force, ऐसे arrow लगा के we used to calculate. now इधर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, देखो चार्ज की जगह में मोनोपोल रहेगा ना, पोल स्ट्रेंथ रहेगा ना, सो M R डिस्टेंस दूर में I want to find the magnetic field at point A. so magnetic field कितना होगा, magnetic field at A is KM/r square, देखो KQ/r square, Q की जगह में M आएगा, and K is what, K is equal to mu0/4π, which value is 10⁻⁷.
ओके एंड नॉर्थ पोल अगर है तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ पोल है तो अवे, आपको वेक्टर क्वांट है ना, वी शुड डू वेक्टोरियली, साउथ पोल है तो टुवर्ड्स. ओके चलो, टू like magnetic poles of strength this much 5 ampere meter and 20 ampere meter. Ampere meter is nothing but pole strength, and different pole strengths are given. So two like magnetic poles m1 m2, two poles are there, okay, are situated at 1 meter distance, 1 meter distance. Why I took m1 m2? Because 5 and 20 different ampere meter is given, pole strength I use. At what point on the line joining two poles the magnetic field is zero? ये याद है ऐसे क्वेश्चंस क्यों डन, प्लस क्यू चार्ज, एक कौन सा लाइन में, हियर हियर और हियर, वेयर विच पॉइंट में द magnetic field is zero? ओके, वेयर इट इज राइट साइड लेफ्ट साइड मिडिल, राइट साइड लेफ्ट साइड मिडिल, ठीक है देखेंगे. यू टेल मी, सी टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स राइट, मान लो दिस नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, ओके नॉर्थ पोल ओके, नॉर्थ पोल इस पॉइंट सपोज इनसाइड आई एम टेकिंग, नॉर्थ पोल की वजह से हियर अवे, एंड इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज अवे राइट. हियर हियर देखो, हियर क्या होगा, आउटसाइड है तो सपोज पॉइंट इज नॉर्थ पोल की वजह से अवे, एंड इस नॉर्थ पोल की वजह से अवे, वेदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा इधर, नो. सो समवेयर इन बिटवीन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर तो नहीं ना, बिटवीन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दो इसके वजह से अवे, इसके वजह से भी अवे मैग्नेटिक फील्ड. ओके नाउ इस पॉइंट पी में एक्स डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान लो, एंड रिमेनिंग विल बी 1 minus x. नाउ इसका फर्स्ट वन सेकंड वन, ये b1 है b2 है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, व्हेन b1 इज इक्वल टू b2. नाउ बिकॉज ऑफ पोल स्ट्रेंथ x डिस्टेंस दूर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, k m1 by x square is equal to, because of this pole इस पॉइंट में k m2 by 1 minus x whole square. Find x. So 1/3. Yes, correct. कर रहे हैं यार, किधर सर्च कर रहे हैं, doing right? Sir, it's the shortcut method. Okay, okay. Root q1 by root q वाला, okay चलो. So here ले लो 1 minus x by x whole square is equal to m2 by m1, m2 by m1, m2 is 20 by m1 is 5 right, 420. So 1 minus x by x is equal to प्लस और माइनस रूट टू, प्लस और माइनस 2 आएगा. सो एक बार प्लस से करो, माइनस 1 minus x by x is equal to 2, 1 minus x by x is equal to minus 2. So 1 minus x is equal to 2x. So 1 is equal to 3x, x is equal to 1/3. Here 1 minus x is equal to minus 2x. So 1 is equal to minus x, x equal to minus 1. Minus 1 means is तरफ, which is not possible. This is answer. 1/3 is answer. Okay. So pole strength कभी भी magnetic field lines ऐसे है तो we have to use any method. We can get the answer. Okay. चलो नो काउंट करते देखते हैं. हाँ याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फेमस वन. डाइपोल की वजह से एक्सिस में, इक्वेटर में, जनरल पॉइंट में. हाँ याद है कौन, इसके बारे में डिटेल में कहते तो आ जाएगा आपको. माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस एल राइट, एल एंड एल. इधर से आर डिस्टेंस दूर में I want to find the electric field at this point. कौन बोलेगा, डाइपोल. I'll give clue. एक्सिस एंड इक्वेटर डबल होगा, P आएगा, KP 2KP, क्यूब आएगा. और कुछ सब कुछ बोल दिया मैं, क्या बोला हूँ, नीचे R क्यूब होगा. बोलो शिवंगी, कम ऑन. 2 kV by R cube. हाँ 2KP by R क्यूब, गुड. दैट इज द एक्सिस में. इक्वेटर विल बी आधा,
आधा kb by r cube, right? Yes. चलो, so इसका याद रखो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज टुवर्ड्स E1, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे E2. Net electric field will be which direction? Net electric field will be which direction? E2 side E1 side इस पॉइंट पे में आई एम ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, because a charge is near to his right, so E2 is greater, so net electric field is in this direction, net electric field, and dipole moment direction is from negative to positive. So in the axis mein, you have to understand dipole moment and net electric field are in the same direction. That's why aapko axis mein electric field at axis mein it is 2 positive आएगा, 2 kp by r cube along p direction only, along p direction, and k, you know, k is 1 by 4 pi epsilon naught. now इधर चार्ज की जगह में मोनोपोल्स आएगा ना, बार मैट है, डाइपोल में बार मैट है, साउथ पोल माइनस क्यू की वजह से साउथ पोल नॉर्थ पोल. ओके, सेपरेट बाय डिस्टेंस एल एन एल, राइट, एल एन एल. ओके, नाउ इधर से आर डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर में उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, मैग्नेटिक मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ नॉर्थ. ओके, सो उसमें सेम आपको साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स B1, एंड नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज अवे B2. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, and magnetic movement is also in the same direction that of magnetic field. That's why positive आएगा, B at axis is equal to 2 k m by r cube, and this is along m direction, along m direction magnetic moment, and k is mu naught by 4 pi 10 power minus 7. सो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी हो जाएगा, अभी फॉर्मुलास याद होता है ना, इजी हो जाएगा. ओके, आएगा. नाउ विल डू द इक्वेटोरियल आल्सो, इक्वेटोरियल पॉइंट में. सो माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन टाइम में भी डन, शायद वीडियोस देखो एक बार समझ में आएगा. माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस एल एन एल, इधर से आर डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट में आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, एंड माइनस के पश्चात माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स E1 E2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो इसका वेक्टोरियल आएगा ना, तो ई नेट इधर आएगा, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखो इन दिस केस में इक्वेटर में net magnetic movement and dipole moment both are in net electric field, and this one both are in opposite direction, opposition. That's why vectorial add करने समय you have to take minus, E perpendicular is minus k p by r cube, but numerical करने समय minus we are not putting, we are putting direction directly. Okay, and k is 1 by 4 pi epsilon naught. डाइपोल है ना, डाइपोल को इधर क्या आएगा, डाइपोल की वजह से बार मैट आएगा, राइट. ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसका पोर्शन एम है, इसका पोर्शन एम है, एल एन एल. इधर से आर डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट वन, इसके वजह से टुवर्ड्स B1, इसके वजह से अवे B2. नेट मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. So, and magnetic moment is from south to north. Since opposite direction minus आएगा, B perpendicular or equatorial is k m by r cube, and k is mu naught by 4 pi.
ना इक्वेटरल भी करने के बाद विल डू द न्यूमेरिकल्स, ये इन लोग ये। ओके नेक्स्ट, एट एनी जनरल पॉइंट देखो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, एल एन एल। ओके, इधर से आर डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट में आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल थीटा में आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो इसके लिए क्या करता था, आई डिवाइडेड द डाइपोल मोमेंट, याद है डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम लाइक दिस, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव पॉजिटिव, आई स्प्लिट द कंपोनेंट्स, याद है डेरिवेशन टाइम में, p cos थीटा एंड आफ्टर उसका परपेंडिकुलर इज p sin थीटा। दिस डाइपोल दिस पॉइंट में इट इज एक्टिंग लाइक एक्सिस पॉइंट, एंड एक्सिस पॉइंट में dipole moment and electric field, net electric field are in the same direction. That's why I called E parallel. Same direction. Okay. Now for this dipole, this point is acting like equatorial point. For this dipole moment, see after splitting isko bhul jao. We have two dipoles. One is P sin theta, P cos theta. For P cos theta, this point is acting like a axis point. Axis point mein we know that dipole moment ka direction only electric field is there. Okay. Now for this dipole moment, this point is acting like equatorial point, and equatorial point में we know dipole moment इस तरफ है तो exactly opposite direction में net electric field रहेगा E perpendicular. ये derivation time में भी done in the electrostatics में net electric field is E net, and this is alpha. Formula याद है anybody? Net electric field. हाँ बोलो सदिक, याद नहीं है? याद नहीं है तो मैं I'll give one chocolate. किसको याद है? Is it kp into root of 1 plus 3 cos square theta? थोड़ा रंग है Cos मैं theta. chocolate, हाँ Only cos theta. no wrong, yes I'll give one chocolate, chocolate miss हो गया kp by r cube into under root 1 plus 3 cos square theta. Okay देखो kp by r cube under root 1 plus 3 cos square theta. Okay, and we have a relation between alpha and theta also. Tan alpha is equal to half tan theta. Tan alpha is equal to half tan theta. Now इसका भी सेम में करो, इज ए बार मैट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर से सेंटर से r डिस्टेंस दूर में थीटा एंगल में I want to find the magnetic field at this point P, and here also we called as B parallel, and this is B perpendicular, and this is B net, and this is alpha, and magnetic field, net magnetic field is K M by R cube under root 1 plus 3 cos square theta, and here relationship क्या है, tan alpha is equal to half tan theta. The resultant direction is nothing but half of tan theta. This is the analogy. So you have to know diagram, बहुत important है, diagram solve करके करने का. Okay, करेगा न्यूमेरिकल भी कपड़ा. ओके चलो न्यूमेरिकल करेंगे. डायग्राम ड्रॉ करके देखो फर्स्ट. डायग्राम आ गया तो इट शुड बी इजीली कैन सॉल्व. Two short bar magnets of magnetic moment this much and this much. So two different magnetic moment. देखो capital M is given, ampere meter square rate, magnetic moment capital M's are given, are placed two mutually perpendicular straight lines meeting at a point P. देखो they are placed mutually perpendicular to each other such a way that straight lines, इसका straight line
meeting at a point P. Okay, straight lines meeting at a point P. The magnitude and direction of the magnetic field at a point P, मतलब net resultant direction चाहिए, net magnetic field चाहिए, if it lies distances 0.4 meters and 0.3 meters from the center of two magnets. So a point P इधर से कितना डिस्टेंस दूर में है, 0.4 मीटर्स में, एंड इधर से सेंटर से ए पॉइंट कितना दूर है, 0.3 मीटर्स दूर में. ओके, नाउ आई वांट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे. नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो आपको समझ में आने का विच इज नॉर्थ पोल विच इज साउथ पोल आपका मर्जी है, आपको लगा सकते हैं. ओके, सो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट. मुझे इजी होने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल पुट साउथ पोल हियर, नॉर्थ पोल हियर, साउथ पोल हियर, नॉर्थ पोल हियर. सचिव इधर देखो, इसके ये मैग्नेटिक इसके वजह से दिस पॉइंट इज एक्टिंग लाइक एक्सिस पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है फॉर दिस मैग्नेट. Axial point, right? Axial point में net magnetic field will be same direction that of magnetic moment. So magnetic moment is from south north. So magnetic field is from B second A to A axis point. If a second magnet, a first magnet. इस magnet के वजह से इस point is acting like a axial point. So axis के long is there. So it is B1A. So net resultant we are trying to find now. Find करो. Axial point का formula मालूम है ना? Find करो, and net resultant find, try to find B net. Direction is from here to theta. Tan it theta भी find करने class. Okay, so B1A formula क्या है? Axis का point is 2km by r cube. This is for ये magnetic moment m1 है, and k तो r is 0.4, here r1 मान लो, and similarly B2A 2km2 by r2 cube, because 0.3 distance है ना. now separately find करो, then find net resultant, अंडर रूट करके net resultant find करो. कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो. and mu naught by 4 pi is 10 power of -7. B1A पहले फाइंड करो, कितना आएगा? Is the answer root 45 into 10 power -2? रूट 35 या 45? 45. हाँ करेक्ट. रूट 45 इंटू 10 पावर -4, मतलब रूट से बाहर लिया तो 10 पावर -4 आएगा. Yes. आया. इसको 3 इंटू 10 पावर -4 आएगा, एंड इसको सॉल्व किया तो 6 इंटू 10 पावर -4 आएगा. सो बी नेट विल बी अंडर रूट this one square plus this one square. So 9 into 10 power of -8 plus 36 into 10 power of -8, right? So इसको सॉल्व करो. 9 plus 36, हाँ कितना? 45, right? So बाहर लिया तो 10 power of -4 under 45. Okay, direction is theta find करो. Tan theta is, देखो, opposite by adjacent. Opposite nothing but B1A by B2A. B1A by B2A. B1A is 3
by 10 ये वाला, so 10 power 4 cancel, 1/2 आएगा. So therefore theta is equal to tan inverse 1/2. This answer. तो मैं तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, डायग्राम आ गया तो देन ओनली कंसोल्व. चलो मैं करो. Two short magnets P and Q are placed one over another. मतलब एक के ऊपर रखा. Their magnetic axes are mutually perpendicular to each other. Okay. So एक के ऊपर एक रखा. Such that their magnetic axis means ये वाला and ये वाला. They are perpendicular to each other. एक P है, एक Q है. देखो magnetic axis ये वाला and ये वाला magnetic axis. They are perpendicular to each other. It is found that resultant magnetic field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P. P को prolongate करने से the net resultant magnetic field is inclined 30 degrees with the axis. मतलब मीनिंग क्या है? इसको मैं prolong किया, इसका net resultant will be 30 degrees with the axis. This B net is 30 degrees with the axis. Okay. Compare the magnetic moment of the two magnets. मतलब M1 by M2 is how much? The P and Q correct. MP by MQ मान लो. MP by MQ is how much? Magnetic moment time. Compare the magnetic moment అంటే capital M. Poles ఉన్నాయి ना? Magnetic moments. करो. तो MP by MQ अच्छा है. MP by MQ. So since North Pole South Pole नहीं दिया, आपको easy होने के लिए कर रहा हूँ. So इधर South Pole North Pole I'm taking. Here South Pole North Pole I'm taking. देखो magnetic field कैसा रहेगा? For this magnet, this point is acting like axis point. Magnetic moment is from south to north. Same direction में आपको magnetic field रहेगा. That is BP of axis point. This axis का formula use करना पड़ेगा. And for this bar magnet, this point is acting like equatorial point. Magnetic moment is from south to north. Though I told you magnetic field will be exactly opposite direction to that of magnetic moment. So it is like this. देखो satisfy होना B net वाला. So B Q perpendicular. Okay. So आपको दूसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं. Tan since 30 degrees is given, directly use करो. Tan 30 is equal to opposite by adjacent. Opposite is BQ perpendicular by BP axis. दोनों फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व. Perpendicular is K M by R cube. ये वाला 2K M by R cube. So K M Q by R cube by distance तो सेम है. K M P Q M 2K PM 2K MP by R cube. R cube by cancel. K can cancel. Therefore M Q by 2 MP आएगा. Tan that is 1 by root 3 MQ by 2 MP. I want what? MP by MQ. कितना होगा? MP by MQ is equal to root 3 by 2. So since 30 degrees is given, that's why we are taking the help of tan theta. So इसका some more like torque and थोड़ा potential energy वगैरह आपको analogy is there, उसका भी करने वाला है. And then we have to go for the materials में some terminologies and ferrodiagram. So maximum 2 more classes में हो जाएगा chapter. 2 more classes में. Okay.